प्रणाम नमस्कार। हम सब आइ लगातार अहाँ सबसँ जुड़ल छी। दिवाली छै, सबके बुझल अइ अहाँ सब व्यस्त हैब, हमहूँ व्यस्त छी। पर आइ दूटा जे छै से बहुत महत्वपूर्ण जे छै से घोषणा, एकटा तऽ बहुत आत्मीय जे छै से आत्मिक जे छै से यात्रा रहल। एखन तुरंत हमसब जे छै से ओहिसँ गुजरलहुँ हेँ। मोन भरल नहि अछि, नहि बुझाइ पड़ि रहल अइ जे केना ओकरा समाप्त करू, लेकिन आइ हमरा सबके लेल पहिनेसँ एकटा तय कयल बहुत महत्वपूर्ण दिन छल। और वो दिन छल जे आइ हम सब जे एकटा आर अनंत यात्रा के तरफ निकलल रही। अन्या स अनन्या वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी, ओकर जे छै से आइ बहुत महत्वपूर्ण दिन छल। कियाकि हम सब विनर तऽ नहीं कहै छियै, विजेता तऽ नहीं कहै छियै, पर ओ जे लगातार हमरा लगैया 150 के आसपास कलाकार, हमर सबके अपन लोग, बाहर के लोग, बहुत बहुत दूर के लोग, सब गोटे जुड़लखिन। और जतेक उत्साहसँ, जतेक प्रेमसँ, जतेक स्नेहसँ सब गोटे अपन अपन बेस्ट जकरा कहि सकै छियै से देलखिन। और 5टा जे छै से ओतबे कहि सकै छियै जे जिनकर स्टेचर, जिनका विश्व जे छै से अथी के क्षेत्रमे, कला के क्षेत्रमे जे छै से एक तरीकासँ नमस्कार करै छनि, ओ सब जज जे छै से ओहि सारा प्रोसेस से गुजरला, ओते रास पेंटिंग के देखला। हमरा सब संग मनीषा झा सनक जे छै से क्यूरेटर रहत, जिनकर मधुबनी आर्ट सेंटर जे छै से लगातार हमरा सब संगे जुड़ल रहल, हम सब संगे काज करैत रहलहुँ। बहुत लंबा यात्रा रहलै। आइ आइ ओकर एकटा भाग के उद्यापन छै, मात्र एकटा भाग के उद्यापन छै। ओ भाग छै ओकर जे अतेक रास कलाकार, अतेक स्नेह, अतेक प्रेम, अतेक आह्लाद, अतेक भाव सँ जे वैदेही के यात्रा के अनंत बनेलखिन और बना रहल छथिन। दरभंगा में दिसंबर में 1215 धरि जकर जे छै से हमसब रस में डूबैत रहब। ओहि रस के जे छै से एकटा भाग के ओही में 10टा जे सबसँ बेसी 5टा के पहिलसँ लऽ कऽ 5म तक आ 5टा फेर सांत्वना पुरस्कार के घोषणा करे के लेल हमरा सबके बीच में आबि रहल छथि आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, नेशनल अवार्डी मनीषा झा आबि रहल छथि। हम हुनकर स्वागत करै छियनि। हमरा सब what a day, what a day. I know. की दिन है, की दिन है। True Diwali, right? I know. Happy Diwali to you हैप्पी and to दिवाली। everybody. दियाबाती के बहुत शुभकामना, सब गोटे के दियाबाती के बहुत बहुत शुभकामना। आइ दिन के तो एकदम पूरा फुलझड़ी वाला दिन छै। बहुत सुंदर लागि रहल छी मनीषा। बहुत सुंदर अहाँके काज रहल है जे वैदेही के पूरा जे छै से जे तरीका से भेला और रंगरूप आयल है, ओ साधारण तऽ बात नहिए टा छै, किछु तऽ कॉस्मिक पैघ छै। आई फेर जी हमरा लगे कि सीता मैया के आशीर्वाद रहे कि ऑल ऑफ अस कुड डू इट एंड जते आर्टिस्ट सब छथिन उनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सब पार्टिसिपेट करथिन और इतने अपन समय लगेलथिन और इतने सुंदर पर्सपेक्टिव सीता माँ के हर पेंटिंग बराबर में आई कैन से देर ऑल इक्वली गुड। खाली छै कि हम सब जेना ई कॉम्पिटिशन छै तो ओहिमे से किछ 10टा हम सब सेलेक्ट करा कर है, सो वी सिलेक्टेड, बट आई कैन टेल यू दैट ऑल ऑफ you are very good and each painting was is worth so much and there's so much in depth stories हर पेंटिंग में हर आर्टिस्ट के अपन पर्सपेक्टिव। हमरा सबके तो बहुत नीक लागल, हमर सविता जी we enjoyed a lot seeing all of your paintings and you know going through that whole journey of selection. And before we announce anything, I would like to thank all the judges because ये हम सब कोनो judgment नहीं के लिए ई सबटा जजमेंट जे एकटा पूरा विश्व में प्रसिद्ध 5टा जे जजेस छथिन, जेना श्री फ्रैंक कोरम, श्री हासीगावा, सुजाता प्रसाद जी, सीमा बाबा जी and Tulika Kedia. So these are our esteemed judges who actually went through that pain of selecting all the artworks and हम सब खाली रिजल्ट के इकट्ठा क के अहाँ सामने प्रस्तुत कर रहल छी। We me and Savita ji are nowhere in the scene for selection. तो हमरा सबके जे एमे कनिक विलम्ब भ गेलै because we got late a little bit because there were few results which came late and definitely we were waiting for it.
but we are equally excited to take out this result, and I'm sure all of you must be equally excited. So maybe Savita ji, you can start. हम सब स्टार्ट करी तैसे पहले किछ जे अपने ठीक छे, अपने बहुत नीक से ओकरा सोचरा के कह देलियन बात के जे हमर सके में कोनो नहीं, 5 टा हमर सके जे छे से एस्टीम जजेज रहत, किछ जे जे पेंटिंग छले वैदेही पर बनल ओ जे लास्ट डेट 2 बेर एक्सटेंड कैल गेलै तकर बाद जे छे से किछ आबि सकलै। तऽ ई छै जे कॉम्पिटिशन के, जे कॉम्पिटिशन नहीं कहियो, एकटा तरीका से कहियो जे ठीक छै हम सब एकटा डोली सजा रहल छलहुँ हँ, तऽ ओहिमे जतेक एखन तिलिया फुलिया गुड़िया सब फिट भऽ गेलै से ठीक छै, पर कनिया एखन एनाइ बाकी छै ओ डोलीमे। कनिया जे छै से ओ दरभंगामे जे छै से बैसथिन डोलीमे, तऽ वी हैव नॉट मिस द बस, राइट? से हम सब जे छै से डेफिनेटली कनिया जे छै से बैसथिन ओहिमे, तऽ ओहिमे जे लोग नहीं एखन एकर प्रतियोगिता के हिस्सा रहला, एक कारवां के हिस्सा रहला, ओ सब गोटे जे छै से एग्जीबिशन के प्रदर्शनी के जे छै से डेफिनेटली जे छै से वैदेही से बाहर और वैदेही से ऊपर किछ नहीं छै। और हमर आ मनीषा जी के हम सब एहि पेज पर एकदम एक छी। हमर के सबसे पहिल संयोजन जे छै से हमर के आत्मिक स्तर पर भेला, समझ के स्तर एक है, कला डेफिनेटली जे छै से ओ कलाकार छथि, नेशनल अवार्डी छथि, बहुत बेसी बुझै छथि हमरा सब। हम तऽ मात्र जे छै से सराहै छी, देखै छी, नीक लगैया, आत्मा के जे छै से लगैया जेना बहुत किछ अथी होइया। तऽ हमरा लए चूँकि हम ओहि परिवेशसँ छी तऽ हमरा लए ओ प्रणम्य ओ कला बहुत नीक बात, पढ़ने छी, बुझने छी ओहि कला के बारेमे। अपने जे छै से सबटा संयोजन कऽ कऽ और 5 जज के जे ई नतीजा हमर सबके नहीं अछि, फेर से दोहरा रहल छी, ई नतीजा जे 5 जज ओहि पेंटिंग सबके जे देख कऽ समझ कऽ बहुत लंबा लंबा डिस्कशन कऽ कऽ मनीषा जी सने जे छै से तकर बाद किछ जज हमरा सने, किछ जज जे मनीषा जी सने जे छै से बहुत लंबा यात्रा पर गेल छथिन, एक आयाम के बुझलखिन हैं, और तकर बाद ऑल ऑफ देम टुक मोर देन 1.5 month, मतलब सब 1.5 महीना लगेलखिन ई जजमेंट करे में। तो आई थिंक all of them wrote to us that it was very difficult for them also to judge the paintings, because all the paintings are very good, and actually art cannot be judged like this, but then एकटा जखन competition होय छै तखन किछ तऽ एहन करऽ पड़ै छै कि कनिक करऽ पड़ै छै। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हमरा सब लग करीबन 140 एंट्री रहे, एंड वो 140 एंट्री में से पूरा विश्व से, पूरा भारत देश से अलग अलग कोना से एंट्री रहे, मतलब अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, एंड भारत के तो केरला से लगा उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह से एंट्री आ रहे। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट so much of interest was generated, and so many people were excited to take part into it and be part of Vaidehi. So out of those 140, jate corona ke bhile mein so many people dropped out, so many people they could not finish the painting or could not continue it ahead. तो फाइनली अमर सबके 101 के करीबन एंट्री रहे, और इनमें से किछ मतलब छटा के फाइनली आई थिंक वी आर कमिंग टू 88 or something like that, right? So out of those 88, we have selected 10 best paintings. First 10 जना Savita ji कहलखिन कि we'll be giving 5 consolation awards and 5 main awards. So 1 to 5 में जो first 5 छथिन, we will give them award, and 6 to 10 जो छथिन, we will be getting a consolation award. So that is the whole process, and ये पूरा 9 महीना के जो process रहे, it was quite tough, it was not easy, because हम सब अहाँ के जते each painting was scrutinized and seen so many times before I had sent to the judges. We saw it, and we went through the whole process, and then putting it in order. And since all of you had written in bits and pieces, so we wrote your story, we put it together, and we wrote the stories and made it simpler for the judges to judge it, because it's not easy to judge 100 paintings together on one topic.
So this is the basic of मतलब जे ई पूरा जे प्रकरण रहे पूरा एकर जे प्रोसेस रहे यहाँ रहे एंड हम सब बहुत लाइक बहुत अलग अलग तरीका से all if you see all our judges they are from different they are related to art but they have different perspective to art त उनकर सबके जे अलग सिलेक्शन उ सब केलखिन त उनकर सबके अपन सिलेक्शन रहन और अपन पर्सपेक्टिव रहन टुवर्ड्स ईच पेंटिंग. So that was interesting, and now I think Savita ji, you can start. Uh, I think I can't hear you. You are on mute. जी जी बहुत नीक से अपने एकरा सोचला के कह दिलिए. हम सब रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाब. पहले 5टा सांत्वना जिनका भेटलन है 10 से शुरू करब. कनिटा सस्पेंस बिल्डअप होवा दियो. सबसे पहिल नंबर पे एना केना आबि जेथिन. मीनवाइल एकटा बात कह चाहब जहन एकटा खास कऽ जे जज छलथि है सुजाता प्रसाद बहुत पैघ जे छै से आर्ट कोनाइजर छथि. हमरा शुरू में एकटा बात कहने रहत. आर्ट कैन नॉट बी जज्ड, इट कैन नेवर बी. यस वी एग्री, टोटली एग्री. अतेक पैघ आर्ट हिस्टोरियन सीमा बाबा रहत हमरा सब संगे. ओ से हुनको सेम एक्सप्रेशन रहन जे देख कऽ ओ सब बहुत आह्लादित भेली, नीक लगलन, बहुत सीखली. और तई प्रोसेस में जे सबसे नीक निकलन है हुनका से बहुत मुश्किल रहन प्रोसेस. फेर से कह रहल छी तैयो 10टा नाम देलत है. 10म नाम जे छै से हम लऽ रहल छी. उनका नाम छन रूबी शर्मा. 10म नाम रमा देवी छै. सॉरी नाम सॉरी तहन तो 9 10 अपने आप रिवील भ गेल. 10म नाम जे छै से रमा देवी छै. अरे रमा दी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग छे. जे रिजल्ट एले इट्स अ वेरी अनयूजुअल रिजल्ट. So Rama Devi ji said she is from the Gudna painting tradition. Okay. She is, so that is very interesting that you know there were many entries from Gudna tradition, the third tradition, and it's very unusual that you know Ramaji was given marks by all the judges. So this is very interesting to have Rama Devi in the list in the first 10. जी तकर बाद नाम छन अपने तो बाजिए देलहुँ हाँ रूबी शर्मा के नाम छन नाम. और उनका विषय में अपने किछ कहऽ चाहबन रूबी शर्मा के विषय में. रूबी बिहार के छथिन, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के. एंड वो एठम शी इज लिविंग इन दिल्ली. She happens to be my student actually, but there is nothing. I mean, I don't know what like the whole marketing has been done. So Ruby is from Delhi, and उनका दिल्ली से स्टेट अवार्ड भेटल छे ना, दिल्ली सरकार से स्टेट मेरिट अवार्ड दोनों भेटल छे. So that's about Ruby. And अपने 8वां के कह सके छिए. अहाँ लिया अहाँ कहियो 8वां नाम. So the number 8 goes to Preeti Karn. Preeti Karn, yes, Preeti Karn is comes from a very good, I mean, very known background. Godavari Dutt ji के पोती छथिन Preeti, and state award छथ बिहार सरकार बिहार से. And इनका अपन जे कचनी शैली के जे tradition of painting में she has done, and she is number 8 in our list. So नंबर 7 अपने कह दियो. 7 जे छै से विदुषनी प्रसाद जी छथि. हुनकर 7म नंबर छन. तो विदुषनी जी बैंगलोर से छथि. एंड ओना बिहारे के छथि लेकिन बैंगलोर में रहे छथि. एंड ओहिठाम से शी इज क्वाइट नोन फॉर हर वर्क. एंड मतलब काफी साल से प्रैक्टिस कर रहल छे. सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग. आई मीन एंड वेरी गुड. I mean, each judges they have given same marks to all these people. Kanik agu pachu, but everybody has given them same marks. So that is very interesting. So that shows that a good art will be selected by anybody. But beauty lies in the eyes of the beholder, and if something is good, it's liked by everybody. So that is the result which is showing. You know, so that is number 7, Vidushni Prasad. 6 अपने कहियो. 6 एकटा बहुत ही सरप्राइजिंग एंट्री छे सिमी ऋषि. I think she is a self-taught artist and she's from Delhi, and
इनका पेंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होय छै एंड आई सॉ इट फर्स्ट टाइम इन द एंट्री ओनली बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ये अपने से सीख के केले थे सेल्फ टॉट है एंड हर पेंटिंग वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग Simi Rishi ji, congratulations to you for coming on the 6th position in such a big list of 140 entries and number 5 नंबर 5 अपने कहबे हम कहबे आपने कह दियो we are coming to the main awards now and we are very happy to have him in number 5 position in the first 5 in fact the first 5 they are all equal there is it's just a procedure or a protocol but 1 to 5 are all equal so आपने कह दिया उनका नाम एससी सुमन जी छथि नेपाल से छथि बहुत पैघ कलाकार छथि हमरा सबके बीच में बहुत आदरणीय बहुत सम्मानित छथि से एससी सुमन जी नेपाल के जे छै से छठम नहीं पांचम नहीं फिफ्थ पोजीशन छन क्योंकि वी आर हैविंग टाई ऑन द सेकंड सेकंड पोजीशन वी आर हैविंग टाई अपने चश्मा नहीं पहनने छी ठीक है अहाँ सब चश्मा हमरा पहिने देब तहन ना हमरा कहै छै आउ त हमरा बिना आँख के नहीं जीव पड़ा काल्हि से चश्मा के हमने पहनने छी चश्मा द फिफ्थ पोजीशन जे छै से एससी सुमन जी के भेलन बहुत बधाई बहुत बधाई सुमन जी and we really thank you for participating in this exhibition and एससी सुमन जी बहुत प्रतिष्ठित कलाकार छथिन and नेपाल के I think is one of the best and we are very happy to have an international entry getting an award because all the entries were treated same मतलब सब ककरो चाहे यहाँ कोनो कंट्री से चाहे कतो से रही लेकिन आगे मतलब प्रोसीजर सेम रहे फॉर एवरीबॉडी तो मतलब एससी सुमन जी की पेंटिंग बहुत ही सुंदर छन एंड आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम टू दरभंगा टू सी दीज पेंटिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या कि ई बात कह दी जे जतबे बेरी मनीषा कह रहल छै जे हमर के हाथ नहीं है हमर के जतबे हाथ है हमर के ओतबे हाथ नहीं है एकदम नहीं है से विश्वास करियो ना सही कह रहल छै सब जजेज के जहन हुनकर अपन अपन इंडिपेंडेंट चॉइस के जहन मिला के जे हमरा के आला क्या कि किछ नाम हमरो चला सरप्राइजिंग है जना ठीक कहला सिमी ऋषि के जे छै से बहुत रास कलाकार संगे मनीषा दिन रात जे छै से अथी करै छथि हम पिछला 4-5 साल से लगातार हुनका सबसे जे छै से एंगेज कर रहल छी पर सिमी ऋषि के नाम जे छै से एकटा सरप्राइज है हमरा सब लेल ए बात एला कह रहल छी ताकि अहाँ सब बुझ सके जे हमर के में कोनो हाथ नहीं है हां एंड इन फैक्ट आई कांग्रेचुलेट सिमी बिकॉज़ उनका पेंटिंग बहुत सुंदर वेरी जी सो हां अब चारिम नंबर चारिम अपने कहियो हां चारिमो सिमिये जैन छै चैताली चौहान she is from Jaipur and I think she is also self-taught and her painting बहुत ही अद्भुत है I mean it's all the judges have really loved her paintings so Chaitali Chauhan from Jaipur is number 4 so congratulations to you Chaitali yeah heartiest congratulations to all of you अब we are very close to 1 2 3 so now we are on number 3 so अपने कहियो कनी टे एक्साइटमेंट बिल्डअप हो दिए कि नहीं बिल्डअप हो दिए से कहू एना केना हम एक सबसे पहले बता दी जे अहाँ सबके एखन बहुत नीक लग रहल रहत रिजल्ट देख का लेकिन फोटो एखन नहीं देखायल जात से बुझ लिया करेक्ट हम सब बात बना दी फोटो नहीं देखा पेंटिंग नहीं देखायल जात ते द्वारे मात्र हम सब आइ जे छै से आर्ट और आर्टिस्ट और प्रक्रिया के बारे में जानकारी द रहल छी एग्जीबिशन में आबा पड़त ओई प्रक्रिया में भाग लेला एखन तक हम सब एग्जीबिशन के ऑनलाइन नहीं के लिए या एखन आप करे के उम्मीदों कम है तै द्वारे हम सब विश्वास करे छिए मुश्किल समय में से हो जे फिजिकल पार्टिसिपेशन ओकरा छुनाय ओकरा देखनाय कलाकार सब भेंट केनाय हुनका से गप केनाय हुनका से सुननाय पूछनाय जे अहाँ की बनेलिए केना बनेलिए हुनकर यात्रा के देखना इक्वली इम्पोर्टेंट है तै पेंटिंग हम सब नहीं देखा मात्र जे छै से नाम से बता रहल छी प्रक्रिया के बारे में बता रहल छी तो हम सब जे छै से चैताली चौहान चारिम तक आबि चुकल छी तेसर दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट अनामिका नाम छन हुनकर लेकिन ओ छै अनामिका
Yeah, Anamika, really, her painting is very, very super, beautiful. Spectacular. हमारे Spectacular. सामने में 3-4 स्क्रीन खुजल है, so I'm actually seeing everybody's work. It's very good, and Anamika ji is from right now living in Karnataka, but from Bihar, and it's really heartiest congratulations to you, Anamika ji, for very great work which you have done and beautiful work. So heartiest congratulations from you, and you are number 3, which is really, really something very great. फाइन। दोसर नंबर पर चूंकि दूटा नाम छन और दुनू हमरा बहुत क्लोज छथि, मनीषा जी जे छै से काज करती दोसर नंबर पर। On number 2 we have a tie, and really unexpected, and I don't know how मतलब दुनू एक के नंबर भेटलनि सब जजेस से। तो हम पहले नाम ले छी अनामिका जी, नहीं, शी इज वंदना सिंह, वंदना सिंह, एंड उनका संग एक और बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है मनोज चौधरी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू for coming on number 2, and it's really beautiful paintings by both of them, and all the judges have given you spectacular marks, I can say। नो हम जल्दी जल्दी सबके मार्क्स चेक कर रही है, and very good। So Manoj ji, both of them are from Bihar, and Manoj ji is living in Delhi। He is also got National Merit Certificate from Ministry of Textiles, and एखन बहुत बढ़िया बढ़िया काज कर रहल छथि। एंड सेम विद वंदना जी, मे बी अपने वंदना जी लिखने छथि कि उनका मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में आई थिंक लास्ट टाइम आल्सो तही पर हम तही पर आबि रहल छलहुँ हैं जे ई नाम देख कऽ और ई रिजल्ट देख कऽ जे हमरा हर्ष भेलै। और एकटा छोट सनक हम गप हिनका बारे में कहऽ चाहब जे 2019-2020 में हम सब 2018 और 19 में जे छे से प्रतियोगिता भेल रहे। 20 में कोविड सिचुएशन के वजह से हम सब प्रतियोगिता नहीं केने रहिए। 2019 में जे छे 2018 के फाइंडिंग गोलू जी और पूजा जी रहे, पूजा झा, पूजा कुमारी। 2019 के जे छे से जहन जजमेंट के प्रक्रिया भ रहल छलैया त वंदना सिंह जे छे से ओमे एकदम एकटा फ्रेश, जेना एखन अपने सब हुनका बारे में, सिमी ऋषि जी के बारे में या फिर चैताली चौहान के बारे में चमत्कृत रही, तहिना हम सब वंदना सिंह के जे छे से कहानी के माध्यम से पेंटिंग बनावे के जे हुनकर राजा हरिश्चंद्र पर जे हमरा याद है, हुनकर पेंटिंग जे छे से अथियो में शामिल कैल गेल रहन, मरबा में शामिल कैल गेल रहन। तो ओ जे राजा हरिश्चंद्र पर जे हुनकर पेंटिंग रहन तेकर जे सराहना अर्थी कैल गेल तो हुनको लेल ई सरप्राइज रहन, बहुत पैघ सरप्राइज रहन। ओ आबि नहीं सकली मधुबनी कलेक्ट करे ला अपन अवार्ड। उनका 3rd प्राइज जे छे से भेटल रहन मधुबनी में ओई बेर। सेकंड पे छे, और मतलब जे एक्चुअली उनका पेंटिंग हमरा सामने में खुजल है। शी हैज एक्चुअली narrated the whole story of Sita Ma in the full this thing painting, that is very detailed, and same Manoj ji के काज थे इतने महीन छन, and he is known for that kind of work because he is a student of Sri Krishna Kumar Kashyap। I think he recently passed away, and the Kashyap ji के शिष्य छथि, and दिल्ली में बहुत बढ़िया काज कर रहल छथि, and he is very hard working person, what I know about him since last 10-15 years। So वंदना सिंह से हो, वंदना सिंह के जे खास कऽ जे हम कह रहल छी जे ओ हमरा लगे हुनका काज के एकटा यूएसपी छन, एकटा खासियत छन, जो कथा के माध्यम से जे छै से अपन पेंटिंग के कहे छथिन। राइट कहियो चीज के मास्टर केलथ है ए बेर जेकरा कहे छै ना जे एक पायदान और ऊपर जे छै से खास लगातार बनल रहली। और ओ जो उनकर भावुक क्षण छलना जहन ओ घर आबि कऽ ओ अवार्ड जे नहीं लऽ सकल रहे से कलेक्ट केली, ओ भावुक क्षण एखनो हमरा मोन अछि। तऽ वंदना एखन बहुत यंग छथि, बहुत जूनियर छथि, बहुत कम उम्र छनि हुनकर, लेकिन जे परिपक्वता कहानी कहे के और जे लगन, जे बात वंदना के बारे में बहुत बेसी प्रभावित करैत अछि। और हम हमेशा प्रशंसा हुनकर करै छियै एहि बात लए जे लगन जे छनि हुनकर काज में ओ अद्भुत छनि, और समझ, लगन और समझ जे छै दुनू अद्भुत छनि। आब हमरा सबके पास जे छै से सबसे प्रमुख जेकरा कहै छियै एखनो पहिले होइ छै
कतबो हम सब जे छै से डाइल्यूट कऽ दिए, पहिल एखनो पहिले होइ छै। पहिल तऽ पहिले छै, and it's a big surprise, and I think a big finding for everybody to know her. Not for me, And not for me, uh, not for me. I would like to clarify because I knew it. I could yeah, see that. I could actually, see that. her, I will share now that when I have been seeing all the paintings, and when I saw her painting, I felt that there was something very special about her painting, and I felt I was telling our team ki, let's see who wins, but I like this. So and that has happened, and I'm not biased, but I'm just sharing ki ऑफिस में हम सब इंस्टेंट जे काज करैत रही तो हम सब सबटा काज रोज देखैत रही. So I think it was spectacular work, and all the judges really liked her work, and the way she has done her rendering, her line work, her presentation, Talent and wise. the way her painting is, showing Sita Rama and her whole and Ramayana in the background, beautifully depicted, just with red color and just black. So it's a red and black हमरा लगैया painting. बहुत बहुत सारा बीन्स अहाँ जल्दी जल्दी स्पिल कर रहल छियै. एक तऽ स्पिल कऽ देलियै जे ओ लड़की छथिन जना शी कहलियै, तहनी बुझा गेलियै जब ओ मेल नहि छथिन. वैदेही के जे प्रथम अथी छथि, प्रथम स्थान पर जे चयनित छथि, ओ डेफिनेटली एकटा स्त्री छथि. हम कहलहुँ जे हमरा लए सरप्राइज नहीं है, पेंटिंग हम उनका पहिनेहो देखने छियनि. लगातार पिछला 1 सालसँ 1.5 सालसँ हम उनका बहुत उत्सुकता के संग देखैत आबि रहल छियनि, कियाकि सीता पर एकमात्र ई पेंटिंग ओ नहीं केलथि है. जे हुनकर हम वॉल पर हमरा नजर आबैया, खास करके फेसबुक पर ओ एकटा सीरीज जे छै से करैत जा रहल He छथि. has been working on Ramayana and He has been working on. हमरा लगैया ओ जब लाइफ से जुड़ल हेती त एखन तक बुझि गेल हेती जे वएह छथि से, लेकिन तैयो नाम एखन तक हम सब नहीं कहलहुं हैं. नाम एखन तक हम सब नहीं कहलहुं हैं. So कहब any guesses? Any हाँ एकदम अगर क्यों guess कर सके छे तो you क्यों can अगर guess. हाँ सीरियसली क्यों अगर गेस कर सकी तो बहुत शानदार रहत. दिवाली के दिन दिवाली धमाका, दिवाली के दिन दिवाली धमाका. Right. ओना ओ लाइव से जुड़ल छथि, हुनकर हम कमेंट देख पाबि रहल छियनि. कमेंट लाउ की दोसर के बधाई दऽ रहल छथिन. Okay, there she is, Archana Mishra. So heartiest, heartiest congratulations to you, Archana. So yes, many guesses came. कंचन झा कहै छथि अर्चना मिश्रा, भगवान ठाकुर सेहो कहि रहल छथि अर्चना. सविता मिश्रा जी नहीं, पूजा झा नहीं छथि. पूजा झा is already, I think, having a very very glorious inning. She is already established. She has a beautiful style of painting. जी ओ नाम जे पहिल नाम छथि, not to take it away from अर्चना, अर्चना मिश्रा जे छै से पहिल नाम छथि. सहरसा के चैनपुर के गाम के निवासी छथि. लगातार पिछला 1 साल से 1.5 साल से या फिर ओहू पे पहने से हम सब 1.5 साल से गौर कर रहल छियै जे पब्लिक डोमेन में जे आबि रहल है बात, ओहिमे लगातार जे छै से ओ रामायण पर आधारित पेंटिंग सब जे छै से केने जा रहल छथि. बहुत हमरा लगैया जे एकटा हुनकर पेंटिंग में एकटा बहुत खास बात छै जे बहुत निर्दोष पेंटिंग छै. हुनका पता नहीं कर केना हम बुझाबी एकरा, लेकिन बहुत एकटा बाल सुलभ एकटा जे छै से लगै छै जेना हुनका में अथी छै. I think she is very evolved, because जना हमरा लागे कि she is evolved, and I think she has a fine art background also, and she's learned painting from Upendra Maharti Center. So all that training and then her own personal input is coming in this particular painting, specifically done for Vedehi. And beautifully, she's depicted Sita Ma and the whole story behind, goes behind at the background, in a very detailed way. Like I may about the criteria रहे, so we all the judges, they were judging on how close it is to how strong is the story, your overall perception, and then how close it is as Mithila painting, like the technique of Mithila painting, is it followed or not. So those were very important criterias for judgment, and I think she scored almost 100% in all the criterias. So so that's very heartiest congratulations to you, and I wish you all the luck. And we expect to see lots of work from you, and we can see a new star coming up in Mithila painting.
I mean, I think we are looking forward to. अर्चना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत गौर से पिछला 1.5 साल से हम सब अहाँ के देख रहल छी, लगातार देख रहल छी। अहाँ सक्रिय रूप से बच्चा सबके सेहो सिखावे में छी, बहुत रास काज अहाँ कर रहल छी। उम्र बहुत कम है, कला जे छे से ओतबे निखरल है। एकटा निर्दोष कला में अहाँ के जे छे से एकटा पर्सपेक्टिव है, एकटा हाँ, अप्रोच है। correct. हाँ, हमरा लागे कि we look forward to seeing more works from her and seeing her at a next platform. बहुत बहुत बधाई, बहुत अहाँ के बधाई कह, बहुत आशीर्वाद दै छी, पैघ होय के नाते बहुत आशीर्वाद दे अहाँ के, बहुत बेसी आशीर्वाद दे। और हम सब जानब एक दूसरा के बारे में। आइ के लेल कलाकार सब के बारे में एतबे। रिजल्ट जे छे से अपने सबके सामने एक बेर फेर से जे छे से आब तो सबटा नाम जे छे से बाहर आबि चुकल अछि, ताहि दुआरे Right. फेर से कहि सकै छी। एक बेर जे छे से ओकरा दोहरा देल जाय, मनीषा जी। जी, so अब हम नंबर 1 से कर रहल छी। हाँ, नंबर 1 हाँ हाँ हाँ, प्लीज। So number 1 is our dear Archana. So फ्रॉम सहरसा, कानपुर। heartiest from Saharsa and heartiest congratulations to you, a new star coming up. यस You know. Then second is Bandana Singh. जी। Congratulations, Bandana ji, and very, very, keep up the good work which you are doing and beautiful painting which you have done. Yes. Then Manoj ji, I have no words for your this particular painting which he has done, and he पहले time पे खत्म कर लेना रहा, and I think he was doing second painting for Vaidehi. But when everybody sees his work, अपने सब देखबे कि it is so minutely done and such a beautiful work. It's like a treat to eyes. Manoj ji, यहाँ के बहुत 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 मुबारकबाद, and keep up the good work which you are doing. I'm sure you will do very well in future. Yes. Chetali number 4, you were really a surprise, and and very Chetali ji के काज. Manisha, third Anamika. Right. No, so we have 3. Okay, right. We have Anamika, number 3. Sorry, Anamika. No, But that's okay. you are equally good. I mean, no words for all of your work, and Anamika's work is very detailed. I can say that she's used color and she's used lines at the same intensity. I subject, if you see all these works, as an artist, when I see it, there were artists like Manoj ji ke kaaj kanik monochrome, and he's used natural colors in his work, which is very subtle. And Archana had a very strong work of red and black, which was very strongly, you could see the work coming up. Same Bandana had done very, very colored painting, depicting the full story of Ma Sita. And I can tell you, as an artist, I feel doing colored painting is very, very difficult, using right combination and at the same time line work together. As a Mithila painting, I've been analyzing on this, so it's a very good work by all of you. And then I think Chaitali's work, when everybody up, you will see the it's very neat and very powerful, very neat, powerful story selection and depiction of story is also very, very clear in her painting. In Chaitali's painting, I've been seeing हमरा 100 के 100 painting कंठस्थ है अपन आँख में. मतलब it's very, very clear. The story is very clear what she wants to say, and the line work, the color combination is very, very neat and beautiful. So heartiest congratulations to Chaitali. And SC Suman Keta, I was speechless to see that work. The kind of depiction of Sita, and he's shown her as a tree, and base may you will see water, so there is no, you cannot make out that water, and there are so many things happening in that water where Sita May is going back to water, and beautiful work and beautiful, very unusual color combination. And he's used writing, he's written at the background of painting, he has written about in on Ramayana, Ram, and so many. It's beautiful. He's used calligraphy, and he's used very unusual and different painting, new kind of painting.
in Mithila True. painting. He's a calligraphist also, by the way. Yeah. So beautiful depiction of Sita Ma. So congratulations, S.C. Subanji, and from Nepal. And I thank you so much for participating. I knew you were very busy. I was pestering him to participate. I was calling him, please send your work, please send your work. And I knew he was there. He had a lot of problem in his family because of COVID and other works also. So, but he finally sent his entry, and it's a beautiful entry, I must tell you. Then Simi Rishi, heartiest congratulations. She's a surprise, a self-taught artist. She's been using. I see that she's been learning from Bawa Devi ji. She's been learning from all the other artists, and she's a combination of all these senior artists. That's what I see of her work. So very good depiction, and there's a lot of in-depth work in her work. विदुषी जी is a very known, very एक मिनट, known. सिमी ऋषि जी के बारे में एकटा बात हम कह चाहब, चूंकि जी। यहाँ बउआ देवी जी के नाम ले लियन, फेर से कह रहल छी ई हमर के डिसीजन नहीं है। हाँ, जे पांचों जज के छन, एक्चुअली बउआ देवी सेहो एकर पार्ट रहथिन। सिमी ऋषि जी हुनकर शिष्या छथिन, हाँ, और बउआ देवी के जे स्थान छन ओ 11हम छन जजेज के अनुसार, पांचों जजेज के अनुसार। बउआ देवी के अगर मार्क्स वाइज देखल जाए तो 11हम स्थान छन। सिमी ऋषि जी हुनकर शिष्या होइत। हमरा लगे कोनो गुरु के सबसे पैघ दिन ओ होय छै जे दिन ओकर आर्गुमेंट के या ओकर कला से ओकर शिष्य जे छै से आगू बढ़ जाय छै, बहुत पैघ दिन है। दोसर अर्चना के बारे में, पहिल के बारे में एकटा बात कहऽ चाहब। सामान्यतया कहल जाय छै जे ए मिथिला पेंटिंग के मधुबनी पेंटिंग से जोड़ल जाय छै। मधुबनी चकी कियाकि ओकर जे राँटी जितवारपुर और पूरा जेटा सराउंडिंग के जे पावर रहले प्रोड्यूस करे के आर्ट के, तई बनिस्पत में हम कह रहल छी, प्लीज ध्यान राखब, बनिस्पत में कह रहल छी जे अन्य क्षेत्र सब जे छै से ओतेक बेसी प्रोडक्टिव नहीं बुझाय पड़ैत रहे। ठीक छै, अर्चना ओइ धारणा के पूरा तोड़ देलखिन हैं। शी हैज कम आउट विथ अ बैंग। फाइन, अर्चना जे छै से ओकरा रीडिफाइन केलखिन हैं जे आब ई पेंटिंग जे छै से ट्रूली ग्लोबल छै। पहले ट्रूली ग्लोबल से पहले ट्रूली मैथिल छै। सहरसा के बेटी छथिन ओ, चैनपुर के छथिन, मिथिला के बेटी छथिन ओना, लेकिन सहरसा तरफ से छथिन, मधुबनी के नहीं छथिन। This is very interesting. ये बहुत interesting fact है बहुत interesting fact है जे तरीका से अर्चना के भेटब ई चीज एकटा सिग्निफाई करैया, जेकरा मधुबनी के जे एकटा ओ टैगिंग छै या मधुबनी के ओइ चौहद्दी में जेकरा घेर का देखे के राखे के जे एकटा प्रयास रहे छै, अर्चना ओइ बाउंड्री के तोड़लखिन हैं, एकटा नया मानक स्थापित केलखिन हैं पूरा सहरसा के तरफ से। आई होप कि सहरसा के लोग सब ए बात के कॉग्निजेंस लेथिन और अर्चना के जे एकटा हुनकर ड्यू छन जे हुनका भेटबाक चाही, एहि बात के जे छै से समझथिन जे मधुबनी पेंटिंग के मधुबनी से उठा के सहरसा ल गेलखिन हैं, कतेक ब्यूटीफुल तरीका से ल गेलखिन हैं। शी इज आवर फर्स्ट chosen artist. Yes. Now number 8 is equally good, Preeti Karn, je Godavari Dutt Kaki ke grand daughter chatin, and she has kept her grandmother's tradition alive, and grandmother के संग अपन जे जना हुनकर पूरे शैली के वो एकटा कंटिन्यू कर रहल छै। So her work is equally good, very nice, and so congratulations to you, Preeti. And then number 9, Ruby Sharma, who happens to be my student, but Ruby has her own journey. She was part of my studio for so many years, and I'm happy ki, as a guru of that she has done well, and she has come up to this level already, and she has already been recognized by Delhi government twice. So congratulations to you, Ruby. And number 10 is total surprise, is Rama Devi ji, जेकी चानो देवी के पुत्री छथिन, and उनका tradition पूरा गुदना शैली छे. So all of you must see her painting, the way she has depicted Sita in Gudna style, and जे उनका this style में वो हिरन बनेलखिन अपन गाछ में, that's spectacular. And I was not the moment I saw that painting,
I was not, surprised when she got marks and she's coming in 1 to 10, which is a very big thing. तो अपने सब सविता जी अपना सब एक और चीज देख रहल छियै रिजल्ट में that all the three styles of paintings have come up in 1 to 10. included. Yes, हाँ, yes. so कचरी भरनी आर जे गुदना शैली छे ओ ओमे सब आर्टिस्ट like they have come with their own, obviously their own talent and their own work, but it is there in this result. So I'm from on behalf of our whole team of MAC and Madhubani Art Center, Madhubani Literature Festival, we really thank you for participating and being part of this show. And now, and especially, I thank all the judges again because they were the one who took that Very pain of difficult. going through those. So all works are equally beautiful, very nice, nicely done. Different stories have come up. In fact, it was very interesting to know so many stories about Sita Ma, and Yes. very interesting when all जे अहाँ सब अपने से पूरा exhibition देखबे तो it will be very very spectacular for the whole world to see this exhibition. Yes. किछ त हम आर कह चाहब किछ बात अछि हमरा अथी में जे ई रैंकिंग आर ई नंबर कतौ से अहाँ के जत्ता ई बहुत महत्वपूर्ण छै एकटा छन जे 5टा विश्व के मानक जे स्थापित करे वाला कला के क्षेत्र में छथिन ओ सब रैंक केलखिन है ओते बौआ देवी के कला के जज नहीं किया जा सके छन ओ 11हम नहीं वो हमेशा नंबर 1 रहथिन पहिल गप Bhava Devi Kaki that she was not part of contest at all. जत्ते senior artists रहते उनका सबके तो हमरा सबके आशीर्वाद रहे. So they are so they were not part of this. So it was just the younger generation and the new people were part of the judgment. हालांकि उनका रैंकिंग कैल गलन है बट बौआ देवी काकी के रैंकिंग नहीं किया जा सके छन और सब बाहर छथिन she is a legend, she is a legend and world famous. Yes, दोसर सब all absolutely जहन हम सब एखन ऑनलाइन छी आ सब गोटे जुड़ल छ त किछ आर नाम और कथा जे हमरा पर्सनली पूछल है हम लेबा चाहब एकटा पूजा शायद हमरा लगैया पूजा कुमारी झा अगर वह पूजा छ त हुनकर जे कथा छन त्रिन के जे कथा कहने छथिन त्रिन के माध्यम से जे कथा कहने छथिन एक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन एक्सेप्शनल कथा छन और जो जनक जन्नी के जे सेंस में सीता के जे पोर्ट्रेयल छन हुनकर जे अगर हम बुझ रहल छी अगर वह पूजा कुमारी झा 12हम नंबर पर छ तो हुनकर ई कहानी छन 13हम नंबर पर इशिता राम प्रसाद छ 14हम पर वीना झा और 15हम पर कंचन झा छ सांत्वना पुरस्कार 5टा के आ 5टा के सर्वोच्च पुरस्कार भेटतन ठीक या छे एखन तक की योजना या छे आब आगू के की हम सब सरप्राइज थ्रो कर सके छी से हम सब नहीं जाने छी एखन किछ नहीं कहब एकर अलावे जे सब गोटे के किछ पेंटिंग ए कंपटीशन के परिधि से बाहर छे किछ एकदम सरप्राइज छलेया किछ एकदम नया नाम छलेया किछ के कहानी अतेक स्पेक्टेक्युलर छलेया क्योंकि चूंकि हम पर्सनली पूजा के उत्तीर्ण वाला कहानी सुनने छियन बहुत बेसी मैच्योर छलन है एकर जिक्र जरूर विचार अगर वह छत 12 नंबर पर तो हमने वह छत अच्छा तो सीता राम प्रसाद के वीना झा के कंचन झा के नाम लेवा चाहब खास करके तो पहिल 15 ई सब छत आब हम सब जहन भेट हैब दरभंगा में तो की हेते नहीं हेते हम सब की नया योजना बना सके छी एकर हम सब एखन नहीं कह सके छी दिवाली छे आइ दिवाली के दिन किस सीक्रेट राखल जाय छै किछ गोपनीयता रखबाक चाही पर प्रार्थना सब गोटे से रहत आशा रहत जे सब गोटे ओतऽ आओ भेट करू आर्ट जे छै से अपना आप में एकटा आशीर्वाद छै ओकरा जज कियो नहीं कह सके छै तैं दुआरे ओहि आशीर्वाद से अहाँ सब सीता संगे जुड़लहुँ वैदेही से नहीं जुड़लहुँ एकटा मोमेंट छै एकटा एहन मोमेंट छै पता नहीं हम सब रिपीट से नहीं करऽ चाहबे एकरा तैं दुआरे ई जे मोमेंट छै ओ मोमेंट से जे जुड़लहुँ उनका पर किछ एहन जकरा कह सके छियै कॉस्मिक कनेक्शन किछ कॉस्मिक आशीर्वाद किछ कॉस्मिक सरप्राइज जे छै से बहुत सारा एमे छै हम सब बहुत बहुत धन्यवाद पुनः करे छी कि आइ अहाँ जे दूटा व्यक्ति के सम्मानित करऽ जा रहल छियन तिनको सबके घोषणा हेबाक छै मनीषा जी हां वो से कह दियन अथी में पूरा योजना में जे वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी में जे पहिल दिन
जे दूटा बहुत सीनियर आर्टिस्ट के फेलिसिटेट कयल जेतनि, सम्मानित। हम सब ओतेक योग्य नहीं छी जे किनको सम्मानित कऽ सकियनि, तथापि भाव अर्थे जिनका दू गोटे के सम्मानित कयल जेतनि, जिनकर नाम जे छै से एक गोटा के नाम हम लऽ रहल छी, एक गोटा के नाम हम चाहबनि जे मनीषा लेती। एकटा छथि श्री गोपाल शाह, हुनका जे छै से स्पेक्टेक्युलर आर्टिस्ट, वेरी मेच्योर, वेरी जकरा कहि सकै छी सीजन्ड आर्टिस्ट छथि। हुनका सम्मानित कऽ कऽ कोनो भी मंच सम्मानित हेतै, कला सम्मानित हेतै। दोसर नाम जे छै से हम मनीषा जी से आग्रह करबनि वो लेती। एकदम सही है, अपने से एग्री करबन। Gopal ji is an international artist and unfortunately he has never been recognized. We take this opportunity to recognize him for his lifetime work, the body of work, और जे हुनकर काज सब पूरा वर्ल्ड के म्यूजियम में छन। एखनो पिछला से पिछला साल एशियन आर्ट म्यूजियम में उनकर काज एग्जिबिट भेलन, एंड अमेरिका के एटलीस्ट आर्ट नॉट अ म्यूजियम में कंटिन्यूअसली फॉर 3 years his work had traveled, many visions, many versions में. So he is a living legend, and so we are very happy to announce his name. And then for lifetime achievement award for female, I think Bimla Dutt Kaki, Bimla Dutt ji, I think there is no match to her work. और हमरा तो बहुत मतलब long association सब artist से छन जत्ते senior से. So we have just started this award, and I would say that Madhubani Art Center along with the Literature Festival will be we hope to continue this awards every year. So this year एकटा बात हम कहऽ चाहब जे ई जे लाइफ लॉन्ग फेलिसिटेशन के जे आइडिया छै, ओकर पाछू जे भावना छै, हम सब भावने टा से व्यक्त कऽ सकै छी, आर किछ नहि। खाली भावना छै, खाली भावना छै। एंड भावना छै, ओ भावना ई छै जे जरूरी नहीं छै जे जे गोदावरी काकी बहुत सकिंकली जे छै से क्लियर तौर से कहने रहथिन अवार्ड के लेल आर्ट नहीं बनाओ। तहिना जे छै से मान लिअ किनको अवार्ड नहीं भेटै छनि, एक्नॉलेजमेंट या रिकॉग्निशन नहीं भेटै छनि, ओकर मतलब ई कतौ नहीं छै जे आर्ट या आर्टिस्ट छोट भऽ गेलै, ओ राज्य छोट छै, ओ स्टेट छोट छै, अवार्ड छोट छै जे हुनका नहीं भेटलनि। तही भावना से ई शुरू कयल गेल एकटा एक्नॉलेजमेंट छै, एकटा हमर सबके अथी पर एकटा कृतज्ञता छै, एकटा विनम्रता छै जे हम सब कहि सकियनि जे आओ 2 मिनट हमरो सब संग बैसू, हम सब अहाँके देखऽ चाहै छी, अहाँके संग बिताबऽ चाहै छी, हाँ हमरा सबके लेल बहुत मूल्यवान छी। ओहिमे दूटा एहि बेर छथि, अगला बेर आर कियो हेता। एहि बेर से शुरुआत जे छै से मधुबनी आर्ट सेंटर बहुत पैघ पहल केलथि है, हम सब हुनकर आदर करै छियनि, हम सब संग छियनि हुनकर, सदैव संग छियनि, जे एकरा चीज के, एहि धरोहर के, परंपरा के, जतऽ जेकरा राज्य नहीं अथी कऽ सकै, एक्नॉलेज कऽ सकै, ओकरा जे छै से कोनो न कोनो तौर पर समाज के जे छै से कहबाक चाही जे आओ अहाँ हमरा लए बहुत मूल्यवान छी। ई मात्र वएहटा जेस्चर छै जतऽ हम सब कहऽ जा रहल छियनि दू गोटे के जे अहाँ सब हमरा सब लेल बहुत मूल्यवान छी, धरोहर छी। तऽ दूटा कलाकार ओहि श्रेणी में जे छै से छथि हमरा सबके बीच में। एकर अलावे 13 तारीख के जे छै से बहुत खास दिन रहत। एखन नाम सबटा हम नहीं रिवील करब। बहुत सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट सब जे छै से कम 20 टा आर्टिस्ट जे छै से हमरा सबके बीच में मिथिला पेंटिंग से रहता, और वो अपन अपन उद्गार, अपन भाव, अपन बात जे छै से हमरा सब संग शेयर करता। ओहि लए खास हुनका लए जे छै से आयोजन कयल जेतनि, आर जतेक भी जे नव लोक सब छथि हुनका सबके हमरा सबके बुझने धैर्य से सुनबाक चाही, सीखबाक चाही और शामिल हेबाक चाही। ई पर्सन टू पर्सन भेंट करे के, सीखे के, एक दूसरा के देखे के, कला के छुबे के, एके छत के नीचा ओहो छथि अहूँ छी, ई सौभाग्य के हमरा लगे बहुत विलक्षण सौभाग्य हेतै फॉर द यंगर आर्टिस्ट, कियाकि इतने लिविंग लेजेंड के संग अगर हाँ के एके रूफ के अंडर आबे के मौका भेट रहा है, तो प्लीज डोंट मिस इट. All the artists must attend this exhibition at Darbhanga and be part of this function on 13th and 12th के inauguration से literature festival के. So all of you must festival, हाँ sorry please continue. Yeah, जे please. अवार्ड जे छै ओकर जे योजना छै ओ एना छै जे फेलिसिटेशन और अवार्ड जे छै से इनॉग्रल के समय जे 12 तारीख से 12 से 15 जे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल है, तेमे 12 का जे इनॉग्रल हेते, इनॉग्रल के बादे जे छै से अवार्ड जिनका 5टा के
प्रथम और 5टा के सांत्वना संगहि जिनका फेलिसिटेशन से होय के छन। ई कार्यक्रम जे छै से 12 के हेतै। 13 के जे छै से आर्टिस्ट टॉक हेतै, जे कि एक दूसरा से हम सब गोटे जे आर्टिस्ट सब छै सीनियर हमर के जे श्रद्धेय सब छै ओ सब एता और बात करता। ओ दिन 13 ओइले छै। तो 12 का जे छै से मेजरली अवार्ड फंक्शन जे छै से ओ 12 के हेतै, जेमे जे हमर सबके श्रद्धेय छथि, जे हमरा सबके मूल्यवान धरोहर छथि, दूटा हुनका श्री गोपाल शाह जी के और विमला काकी के, विमला दत्ता जी के जे छै से सम्मानित कयल जेतन। और 5टा जे सीनियर जे सॉरी सर्वश्रेष्ठ जे कलाकार हमरा सबके बीच में चुनल गेलथि है हुनका सम्मानित कयल जेतन। और संगे जे 5टा सांत्वना पुरस्कार में छथि हुनका सबके सबके जे छै से सम्मानित कयल जेतन। सब गोटे के स्वागत है। एकर अलावा मनीषा किछु आर कहऽ चाहे छियन? बस यह रहते ही है वहाँ के झोड़ा में हमेशा कहियो नहीं एमे यो छै कि जे 13 तारीख के जो सीनियर कलाकार सब हेथिन, वी विल बी फेलिसिटेटिंग देम आल्सो एक्चुअली ऑल द सीनियर आर्टिस्ट एंड ये एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी छै फॉर द यंगर जनरेशन टू कम एंड लिसन टू देम and see each other's work, क्योंकि ये जे पूरा प्रोसेस रे वेगई के is just that कि पहिल बेर बिहार में एहन कोनो एग्जीबिशन भ रहल छै where proper exhibition में ई पूरा पेंटिंग सब अहाँ सब एक संग देख सकबे। So each artist can see each other's work. Generally, I've seen that artists don't share their works. ई पहिल बेर हेतै कि each artist will share each other's work. You will see and discuss each other's work. So please be there and don't miss this opportunity. हम यह कहा चाहब और बहुत बहुत धन्यवाद और happy Diwali to all of you. Enjoy your Diwali. Congratulations to all the winners and congratulations to all the participants actually for being part of this process. Not Yes, only and thank you so much. thanks. Yeah. A heartfelt thanks, a deep heartfelt thanks for all your endeavor, your kind of a very long journey, the way you have lived Sita, the way you have lived Vaidehi, जेना अहाँ सब वैदेही सने रहलहुँ हैं, जीलहुँ हैं। हम आशा करै छी, हम सब आशा करै छी जो बहुत मूल्यवान समय रहत और ओ चीज के जे छै से लाइफ लॉन्ग चेरिश कऽ सकै छी, जे हम सीता के सोचैत सीता के संगे जे छै से अतेक रास समय गुजारलहुँ, ई अमूल्य छै। सबसे पैघ हमरा लगैया जे परिणाम एकर जे छै से परिणति एही में भऽ सकै छै। हमरा सबके लेल हम सब जहिया से एकर कॉन्सेप्ट माथा में आयल और जहिया से जिनाई शुरू केलहुँ, we have been, I mean, we all have been, along with the artists, Manisha, me, lot of the people have been living Vaidehi. I think many people whom you do not know even, we do not know even. They are very excited. They are very excited. They are very keenly, in fact, एकटा नाम के तरह हम जिक्र करऽ चाहब, खास कऽ कऽ निफ्ट पटना के डायरेक्टर छथि एखन ओ संजय जी, हुनका से जिक्र होइत रहे वैदेही वाला के। He started crying. कहलखिन सीता के अतेक रूप में एक संगे एक छत के नीचा व्यक्त केनाइ की कॉन्सेप्ट छै। तो ई जे ओवरवेलमिंग एकर जे अथी छै, एकर जे भावुकता वाला है कि सीता मोर देन एनीथिंग एल्स जे छै से हमरा सबके लेल भावना छथि, हृदय में छथि हमर सबके। पेंटिंग पर तो बस उतारलियन हैं अहाँ सब, तो जे जिलहुँ हैं तेला बहुत बहुत धन्यवाद। दोसर जे फेर से कह दी जे किनको पेंटिंग हम सब ऑनलाइन एग्जीबिशन के मोड में बिल्कुल नहीं आनबेन। ओ देखे ला अहाँ सबके दरभंगा आबे के, 22 में दिल्ली आबे के यहटा पॉसिबिलिटी छै। तैं दुआरे मात्र और मात्र कलाकार सबके जे 10टा चुनल छथि हुनकर नाम, हुनकर डिटेल और हुनकर कहानी की छन ओ सीता बनाबे के पीछे सोशल मीडिया में रिलीज कैल जेतन, से ओ आराम से अस्थिर से। और एक चीज छूट गेल है सविता जी, नाउ ऑल द आर्टिस्ट कैन सेंड देयर वर्क। This is the most important area. I think we were overwhelmed. दिवाली जे छै से आइ बहुत ओवरवेलमिंग छै। दिल्ली के जे केंद्र छन, 2टा जगह अपने सबटा पेंटिंग पठा सकै छी। पहिल जे छै से मनीषा लग में मधुबनी आर्ट सेंटर जे छै से दिल्ली ओकर केंद्र रहते, जे भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अहाँ सब जे छै से किछु लोग पठाइयो चुकल छथि, काफी लोग, किछु लोग और पठेता। मनीषा जी के जे छै से पता जे छै से ओहिमे काज करतन दिल्ली केंद्र के तौर पर, और मधुबनी के सेंटर के तौर पर जे छै से कौशल जी के कौशिक जी के जे छै से कौशिक कुमार जी के अपने पठा सके छिए। और so all the people whatever you find convenient,
तऽ जे सब बिहारे में छे अपने सब कौशिक के पठा सके छे, इट विल बी कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू, चाहे बाय हैंड चाहे बाय कुरियर, प्लीज सेंड इट. And I think Savita ji, the last date to send is we have any deadline 20th, I guess. 20th of November. November, yeah. 20 November को जी. Yeah. I think so, 20th or send it as soon as possible. We will be informing you. 78 टका जखन बाकी छे तो शुरू भेले है, बल्कि शुरू नहीं भेले है, ताकि हमरा सबके फिजिकली ट्रांसपोर्ट करा पड़त, फिजिकली एग्जिबिट करा पड़त, एमे बहुत प्रोसेस छै, एकरा फोटोग्राफ करबा पड़त. सो प्लीज सेंड योर वर्क एज सून एज पॉसिबल. तां द्वारे सबसे सब गोटे से आग्रह रहत जे जते जल्दी से जल्दी मधुबनी में कौशिक जी के और दिल्ली में मनीषा जी के पास पेंटिंग we will be sharing the address on MLF and MAC, Madhubani Art Center. We will put the two addresses. So apne sab whatever is convenient, please send your works and just as soon as possible, I can say that. And hamra hum sab ekta consent letter also we want from your side, saying that MLF can print it anywhere your works, and that's a copyright, you are agreeing to this, so we'll be sending you this detail. And also please share price of your painting on the email which you had sent your work, so that you know, agar if kyo कीना चाहे छे त हम सब बहुत पहले वो करने छे कि we will connect you to the buyer. The apne sab you can send your the prices of your work also along with your acceptance of the painting. हाँ सब मेल के माध्यम से अपन अपन परमिशन भेजबन एग्जीबिशन के लेल और पब्लिश करे के लेल, तहने ओइ में अपन प्राइस जे अहाँ के पेंटिंग के जहाँ के जे इच्छा हुए अहाँ के जे राखा चाहे छी, that is your price. that is your choice. हमरा के किछ नहीं कहबा के छ, त ओ अपन वही पेंटिंग में जे छे से वही मेल में लिख देबन. But and last but not the least, that is एबर के जे फेस्ट बुक छे, जे मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के जे किताब छे, जे सब बेर आबे छे, जे परंपरा रही एलैत अछि, और इहो परंपरा छे जे बेस्ट चोजन जे आर्टिस्ट रहथिन हुनकर कवर के भेटै छन और हुनकर काज के डिस्प्ले जे छे से ओही किताब में कैल जाय छे. ओई किताब के नाम एबर जे छे से अरिपन रह जा रहल छे. एकटा आर चलू कैट इज आउट ऑफ द बैग, अरिपन जे छे से रह जा रहल छे. तो ओई अरिपन में अरिपन कोनो चीज के फंडामेंटल होय छे, वह छे जमीन. ओई तैयार कैल गेल जमीन पर जे छे, ओई फंडामेंटल सोच पर जे छे से ओकर कवर पर और ओकर किताब के भीतर हम सब साल मरवा में से हो, एही बात में से हो, जे चोजन वर्क्स रहे छे तकरा हम सब फीचर करे छिए, अहू बेरो कैल जेते. तो तेकर परमिशन जे छे से हो, जहन अहाँ अपन पब्लिश करे के परमिशन दै छिए, तो ओ अहाँ के जे फर्स्ट 5 छथिन तिनका ई गरिमा भेटतन, तिनका ई लाभ भेटतन जे हुनकर काज जे छे से अरिपन में जे छे से शामिल हेतन. एहि संग के एहि सब सूचना के संग की छूट गेल हैत कमेंट कर सके छी, हम सब कमेंट पर नजर बनेने राखब, और हम सब जे छे से और अगर कि हमरा सबके कहे के रहा तो वी विल कम बैक टू यू. यस आई दिवाली के दिन फुर्सत दिया गणेश लक्ष्मी जी से हो वेट कर रहल छी. जे छे आगे तो बहुत लंबा हो गेल. या सो and we thank you. I must thank you on behalf of everybody that the kind of work which you're doing is incredible, and it's not easy to do all these kind of you know, this such a big festival where you are handling so many people, and you have made Vaidehi possible, and you're making this competition and this exhibition possible. So we really, from core of our heart, we thank you, Savita ji, for organizing this. Thank you so much. आपके बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बेसी हृदय से जे छे से फेर से शुभकामना से दऽ रहल छी, बधाई दऽ रहल छी. जे तरीका के संलग्नता, जे तरीका के समझ जे छे से अहाँ के रहल है संगे संग, ओ हमरा लेल एकटा बहुत पैघ एसेट अछि. हमरा लगैत अछि जे अच्छा किछु लोग आर छथिन जे हमरा संग छथि और बनल रहती. तो एहि विश्वास के संग आइ के लेल जे छे से विदा लै छी. वैदेही हमरा सब संग छथि, हमरा सब संग रहती और हमेशा रहती. वैदेही से फेर भेंट होइया दरभंगा में. उद्यापन खाली प्रतियोगिता के छल, अथी वैदेही के नहीं, वैदेही के उद्यापन नहीं भ सकै छन, हुनकर उद्यापन नहीं हेतै, ओ चलैत रहती, ओ बनल रहती. यही के संग विदा लै छी. मनीषा जी किछु कहबाक अछि अहाँ के?
I think we are done. So all the participants and all the winners, please enjoy your Diwali. It's a great day. और हाँ सबके सब दिवाली के गोटे के बहुत हृदय से धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद सब गोटे के, बहुत राइट। हृदय से धन्यवाद, छोट के आशीर्वाद, थैंक यू। बहुत या आशीर्वाद, थैंक यू। बाय। प्रणाम।